So today, what kind of errors did you detect? Sir, there are so many. There were grammatical mistake that Chanda makes. That she was saying that I I just forgot the word that she was using to in the like she was that I woke up. I wake up jaldi. She make this errors with with her first sentences. Mhm. I can't. I didn't remember, but I can. I will say. I will told her that. Keep on noting them down so Okay, that you sir. can, in fact, after every speaker ends, you there and then tell the errors. Okay, sir. Better. Okay. And So, don't wait what is for the name of people the to lecturer who is taking the lecture today? Anuradha ji. Okay, sir. And sir, what about the Bharat sir who will take the class related to Zoom? He's not well. He will join after some time. So let's begin. I think I don't know why Anuradha ji had to join, but she's not somehow connecting to the phone also. So I think she's trying to join. She's trying to join Okay. the class. Okay. So sir, today we have to give the review of the previous classes Yes. from the Sorry, very. brother, my Okay. network issue was kinda because of this. I didn't speak. Pratham, you are in the Prayas group. Yes, sir. Okay. You got the link now Yes, sir. in the group made by your computer teacher. What's her name? Ravinder, Ha, Ravinder Ravinder Singh ji. Kaur. Ha. This link came in the morning only. Sorry. Okay. Instead of waiting for more people, we will start the class now. I'm discovering that this is a mixed batch. Some students have been there from our first class, which was, I think, around 14th of January was our first class. Aradhya, do you remember? Today is our 10th session. And I think our first class was around 14th or 13th of January. So Yes, many sir. of you have joined only from last time. So today what we'll do is we will review the main learning point from each of the previous classes that we have had. Okay. So in the very first class, I had introduced how we formed this group, what is our aim, and I also mentioned what learning materials you should use on your own also, apart from attending class. Does anyone remember, apart from Aradhya, who else was there in the first classes? No one? Okay, Aradhya, can you tell them? Yes, sir. Yes, sir. Yes. The first lecture was on 12th January. Okay. I was checking. Okay, What sir. A learning warm good evening. materials? What learning materials did we assign apart from attending classes? What you should consult? Yes, sir. I'm telling. A warm good evening to everyone. This is Sir Aditya Gi, and I welcome you.
in the session. So first of all, uh, in our first lecture, some mention about the what should be the material that we should use, or the method or the way that we can improve our spoken English. So they were some of the points that I have mentioned during the uh, first class, that we should talk to we should talk to ourselves with a simple sentences. No. Sorry, Aradhya. I'm not asking what exercises students were asked to practice. I'm asking what kind of materials were recommended. Okay, I'll tell. There are obviously books, then there is Sir, good material on the internet. Who's speaking? sir, good evening. Okay, good evening, but don't interject when we have started the class. We will wish only at the beginning and when we end. Okay. Now I am telling you what all we have discussed in previous classes. The first important thing is you must know what all reference material, that is, what all you can consult. So among books, there is a very popular book we have recommended, Rapidex English Speaking Course. But for those who are more advanced, you must have the Renan Martin grammar book. That is very good. It is grammar as well as composition. Ren and Martin. This book is available in PDF form on the internet. Okay. If you don't find it, I'll send it to you. Apart from books, and these books are in audio form also. So even while you are working, you are walking, you can just put the earphone on and listen to the books also. So, but apart from books, you have got videos, many good videos, but some of them are actually misleading. So I recommended particularly some videos on spoken English by Professor of Osmania University, Pratima Roy. Okay, she is very good. You can listen to her. Then of course you have to do some exercises yourself. Unless you do that, you will not advance very far. मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा. अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आए, just raise your hand or call out. I'll translate into Hindi. Okay? If I'll speak in English, you will pick up faster. So apart from videos, then you have also some apps. Apps you all know, like Zoom app. There are also some language apps. There is one good one by BBC, which teaches English. Also, there is another European app called Duolingo. Okay, these are good apps. There are many Indian apps also, which help you in talking to friends, in getting your exercises corrected, etc. So these are reference materials. But most important thing is the exercises that you do. Now, Aradhya, quickly tell what exercises did we mention? Yes, sir. Thank you, sir. The first exercise was to talking yourself in front of mirror. Start with, or while you're traveling to somewhere, you should start talking to yourself by describing the beauty of the nature. Start with the simple sentences, and then when you start realizing that you are getting good enough in simple sentences, start with the complex sentences, and then. Uh, get a step forward, starting talking with your friends who also are keen learner to speak, who is keen to speak in English. uh, it will benefit you both, your friend and you will. So next step, start using some of the apps like Omegle, and it's a video calling app. I have mentioned it before you, that it will surely help, that you can help, it will help your fluency and your communication efforts, that you can put. And first, and at least you should read a novel, a newspaper. That's it.
I'll add 2 points here. Uh, Please watch English films and English news, especially. And while you are watching, in fact, select those which have got their subtitles in Hindi also, so that you don't miss out on any difficult word. There and then you will understand. In fact, I think in the on the internet now there is an option that when you are watching any YouTube, say Beyond News, I had suggested is a good English channel. You can, I think, also ask the channel to show the subtitles in your chosen language. Okay, so try and watch movies, serials, news, especially in English, spoken English, but with Hindi subtitles. That will be very helpful. Okay, and while you are listening, जिनके साइड से नॉइज आ रहा है, प्लीज स्विच योर माइक ऑफ. यू ऑल नो कहाँ से नॉइज आ रहा है, आप अपना माइक ऑफ रखिए. Yeah, I was saying, while you are listening to news or any dialogue on television, you pay attention to pronunciation and syntax. Syntax is sentence construction. Okay, उसको खास तौर पे ध्यान से सुनने की कोशिश करो. These are the difficult things. If you start attending to them, your spoken English will become very good. Now, in the next class, we had discussed what are the various aspects of any language. Apart from spoken form, what other forms are there of a language? Any language. Apart from Aradhya, is there any other student from the first 2 classes? Okay, Aradhya, do you remember, apart from spoken form, what other aspects of the language are there from any country? Sir, it was pronunciation, fluency, syntax, sentence formation, and sir, it was one more word. I am just I'm not able to recall it. Okay, let me There tell. were five. Yeah, these are good points. But first of all, vocabulary. The most important thing when of any language, first is vocabulary, that is word and meaning. Whether you can form a sentence or not, but first thing you learn is some words and their meanings. Okay, then syntax, spelling, pronunciation, etc. Syntax is sentence construction. What are the rules of constructing a sentence? For example, in Hindi, the verb comes at the end of the sentence, whereas in English, it is the object noun which comes at the end. I'll illustrate this. Ram hits the ball. Ball is object noun, Ram is subject noun, and verb is hit. Hit is coming in between. Verb is coming in between the sentence. Okay? And object noun is coming at the end. But when we will talk in Hindi, verb is coming at the end. राम ने बॉल फेंकी. फेंकी वर्ब है, वो एंड में आ रहा है, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट नाउन एंड में आ रहा है. This is one reason why learning English is slightly more difficult for Indians. All Indian languages have a syntax rule which is very different from that of English. That is why those who are beginning to learn English, they make many mistakes at the beginning. This rule, because these basic grammatical and syntax rules are different. Syntax means in what order noun, verb, etc. will come. So in English, it is very different from Indian languages. Okay? And this has to be picked up. We'll tell you more on this. Now, I had, of course, also mentioned in my third class that if so much is available on the internet, what is the use of attending these classes? Above all, we will, in fact, on the internet, there is a lot of material today. Some of that is not good, and you will not be able to make a good choice. Internet, of course, should be used, but we'll guide you.
these classes are important to attend, because you will know better which material to use from the internet also. Secondly, we will do a lot of practice exercises. We will do some home assignments and point out the specific errors that you are making. That is why attending class is very important. Okay? Although there are so many good videos on the internet, you can learn from them also. But 1 hour attending daily class is very good. Now, in my 4th class, I described what are the various parts of speech. Everyone knows there are 8 parts of speech: noun, pronoun, adverb, adjective, verb, preposition, conjunction, and interjections. Can anyone repeat? Please let me see who can repeat the 8 parts. Gulab Shah, can you repeat? Sir, I remember only 3 to 4 points like noun, Okay. pronoun, adjective. Yes, Yes. sir. Adjective, verb, Adverb, and adverb, verb and adverb. Prepositions, conjunction. preposition, Ah, conjunction. Huh? very good. Yes, yes, yes. May I, And sir? interjection. Last one is interjections. Sir, Interjection. first And is Interjection. Yes, sir. yes, sir. also there are articles. The, and these are Yes, articles. sir. I heard somebody wanted to say something. Okay. Apart from parts of speech, there are parts of the sentence also. What are the major parts of the sentence? Yesterday, a lot of discussion was about the relation between the subject and verb. Okay. Yesterday, sorry, Soma ma'am told you about the relation between, or the rules about relating verbs to the subject. Noun can come in 2 forms, as subject or object. Okay. But the verb has to be related to subject, not to the object. That is the main point to be understood. आप जब सेंटेंस सुनते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि वर्ब को सब्जेक्ट से हमें रिलेट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि नाउन जो होते हैं वो कई हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच नाउन is coming as a subject, which noun is coming as an object. वर्ब को एग्री किससे कराना होता है? सब्जेक्ट वाले नाउन से. ओके, this is the most important thing about yesterday's class. Now, apart from subject, the sentence also has the predicate. Predicate is the, please switch off the mic on your side. जब आपको बोलना हो तभी माइक ऑन कीजिए. So subject and predicate is the rest of the sentence. So these are 2 main parts of the sentence, and within that then come the 8 parts that we said: noun, pronoun, adjective, adverb, etc. Okay, these are 8 parts of speech. But you should not confuse. We will at some later stage discuss figures of speech. Can any one of you tell what are figures of speech? Parts of speech are noun, pronoun, etc. What are figures of speech? Figures of speech is a very advanced topic in any language learning, and they are the words that are used not as any of the 8 parts that we have identified,
but as a metaphor or a simile or a personification. इनको हिंदी में जैसे बोलते हैं, मेटाफर को उपमा बोलते हैं। किसी चीज की हम सर उपमा देते हैं। अलंकार बोलते हैं। हाँ, अलंकार, उपमा और पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिवाचक। झूठ बोल रही है सर, ये झूठ बोल रही है। Sorry, don't criticize each other. You can make some error. That doesn't matter. So in English, figures of speech are metaphor. I'll give you an example. So even if you don't understand the exact Hindi, you will get the main point. Simile is when you say her face is like the moon. तो हम चेहरे को सर लाइक इज अ सिमिलर। चांद से कंपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज सिमिली। ओके, मेटाफर तब होता है जब when we don't say is like a, but we just use the word moon. आज मेरे घर जैसे चांद निकल आया है, तो यहाँ पर हम किसी के फेस को तुलना पूरा कह नहीं रहे कि वो चांद जैसा है, पर वो उसके आने को हम ये कह रहे हैं कि वो चांद ही है, तो वो मेटाफर हो गया। ओके, these are figures of speech which give beauty to the language which poets, writers, etc. use a lot. Okay, anyway, we are not going into figures of speech today. I just wanted to mention this because parts of speech on which we are focusing should not be confused with figures of speech. वो थोड़ा similar sound है, इसलिए मैंने उसको अभी आपको clarify किया है। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, तुम सभी को बाप आ रही है। I will have to mute anybody who is So you using can a lot also of remove them if they are making disturbance in the class. जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। So you can remove him from the class. These are options. पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, तुम सभी को बाप आ रही है। भाई ये क्यों हरकतें कर रहे हो तुम? Okay, now I have removed that person. Yeah. Now, in the next class, we had talked about the most difficult part of speech to understand is verb forms, because verbs के भी बहुत सारे types होते हैं. You all know past, present and future tense होता है. Along with that, each of these tenses, these are called tenses, have a fourfold classification. उन सब के भी चार टाइप है. Simple present, present continuous, present perfect or present perfect continuous. I would be very happy if anyone can give an example. Simple present, present continuous, present perfect और present perfect continuous का आप सेंटेंस बना के दिखाइए.
I hope everyone has understood. Tenses प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होता है और उनमें ही फिर चार चार फॉर्म्स होती हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं एग्जांपल देता हूं। आई विल हैव बीन सिंगिंग, ओके, पास हो जाएगा आई वुड हैव बीन सिंगिंग, आई हैव बीन सिंगिंग, ओके। इसको हम और बाद में प्रैक्टिस करेंगे, टुडे यू शुड जस्ट रिमेंबर। लेकिन वर्ब्स के फॉर्म्स यहीं खत्म नहीं होते, इसके अलावा भी वर्ब हम लोग ज्यादा टाइम इसीलिए लगाएंगे। वर्ब हैज वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनो तुझे रानी, ए रूपाली, ए रूपाली। आपकी साइड से ये एरर दोबारा होगा तो हमें परमानेंटली रिमूव करना पड़ेगा फिर। Do you all agree we should remove somebody who is not able to attend to the noise? Is it okay? Yes, okay. Khushi is saying. Now, I was saying that verb has other classifications also. One is moods. Verb has different moods. For example, imperative mood, interrogative mood. ये अभी आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको हम आगे कभी लेंगे। Then verb also has different modals. May I, can I, these are different modals of the same verb. और फिर वॉइस तो तुम्हें पता ही होगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता है, ये एक वर्ब का अलग क्लासिफिकेशन है। एक्टिव वॉइस है आई हैव रीच्ड, आई एम हिटिंग द बॉल इज बीइंग हिट बाय मी, वो उसका पैसिव हो गया। Apart from this, lastly, there are three other mutations that verbs make. अभी हमारा टाइम 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। After that, we will rejoin if some point is left. So I was saying there are three more mutations that any verb can make. A verb can come as a noun. Okay. For example, cycle. I cycle on the road. Cycling on the road is good for health. Here cycling is coming not as a verb, continuous verb भी नहीं है, वो एक noun की तरह आ रहा है. That is called gerund. Gerund क्या होता है? Somebody please repeat. Gerund is that verb which comes like a noun in the sentence, and generally it is followed by ing. I am singing, यहाँ singing verb है, okay? क्योंकि वो बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. But singing is a very special talent. यहाँ पर singing noun की तरह आ रहा है. This kind of verb which comes like a noun is called gerund. वो verb जो एक noun की तरह आता है, यानी कि verb उससे agree करेगा, singing is बता रहा है singing क्या हो, तो वो सब्जेक्ट नाउन है. सिंगिंग यहाँ सब्जेक्ट नाउन है, पर वो वर्ब एक्चुअली तो वर्ब था ओरिजिनली, पर वो नाउन की तरह आया है, तो इस तरह की वर्ब को जेरेंड बोलते हैं. ओके. इसी तरह से सम वर्ब्स कम लाइक एन एडजेक्टिव. दोज वर्ब्स व्हिच कम लाइक एन एडजेक्टिव आर कॉल्ड पार्टिसिपल. ओके. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे ड्रंक वर्ब है, यानी कि वो पानी पी चुका था, उसके लिए ड्रंक बोलते हैं. ही हैड ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुका था. बट ही वॉज ड्रंक. अब यहाँ पे ड्रंक एक एडजेक्टिव की तरह आया है, वो ही के बारे में बता रहा है. ही वॉज ड्रंक, वो पिए हुए था, ही वॉज ड्रंक.
तो यहाँ पे वर्ब एक पार्टिसिपल है क्योंकि वो एक एडजेक्टिव की जगह ले रहा है. ओके. इसी तरह से एक इन्फिनिटिव फॉर्म होता है वर्ब का, जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल. जो इन्फिनिटिव होता है वो जनरली टू के बाद आता है. टू सी इज टू बिलीव. टू के बाद सी आ रहा है तो वो इन्फिनिटिव हो गया. टू गो, आई हैड आई टू गो टू स्कूल, आई टुक द बस. टू गो ये इन्फिनिटिव हो गया. सो let me again check if you these are difficult topics. I am going slow. Let us just see if anyone can repeat what are the various forms of verbs. In what different forms can a verb come in a sentence? You may not be able to repeat the whole thing that I explained, but थोड़ा आप ट्राई करो जितना भी बोल सकते हो. वर्ब के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं सेंटेंस में? Anyone, please try. मोनिका आप ट्राई करो. गुलफ्शा, Yes, please try to describe the various forms a verb can take in a sentence. बहुत सारी फॉर्म्स हैं, थोड़े बहुत बताओ, बाकी में हम कंप्लीट करेंगे. sir, I have no clue. Yes, I could not hear you, Gulabsha. Sir, I said I have no clue. You have no clue. Sir, अभी आपने बहुत सारे फॉर्म्स डिस्क्राइब किए. Why were you not able to? Can't you repeat even one or two? वर्ब के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? एक तो first होता है form, पास्ट, second प्रेजेंट form, और third फ्यूचर. form. Yes, हाँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना. sir. और इन सब के भी फिर चार चार फॉर्म होते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, Present प्रेजेंट perfect. परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट. चार हो गए. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मोनिका, यू वांट टू से समथिंग? Hello, sir. हाँ, गो अहेड. Sir, can I tell verbs all forms, tenses all forms? या प्लीज डू. Sir, first of all, simple present tense or present indefinite tense. And second is a present continuous tense. Third is a present perfect tense. And fourth is a present perfect continuous tense. And in the past tense, वेरी first गुड. is a आप याद करके बोल रहे हो या पढ़ के तो नहीं बोल रहे? no, sir. Okay. I am teaching for my children and primary student. Okay, So very I good. know. Okay. And then Apart past from tense, tenses, what other form verb can take? yes, sir. Apart from tenses, Yes, और verb के क्या क्या forms हो सकते हैं? sir. Verb के एक first, जैसे एक sir होता है helping like verb और एक yes, होता है, ये मैं शायद बताना भूल गया था. verb Verb के can sir come first as a form, helping second form, verb. third form. Just like a baked and will baked. Will bake. These are the tenses. These are present, past and future. Okay. आप उसको Yes. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कह रहे हो. वो एक ही Yes. बात है. But apart from tenses, the verb can be auxiliary verb or a helping verb. जैसे Helping verb. Yes. is singing. Is singing में is जो है वो helping या auxiliary verb है, वो एक ही बात है. auxiliary बोलेंगे या helping बोलेंगे?
जो Yes, छोटा yes, वर्ब yes, होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, yes, yes, उसको yes. ऑक्सिलरी भी कहते हैं। और जो मेन वर्ब होता है इज सिंगिंग। सिंगिंग जो है Sing is a उसको main बेस, verb, sir. हाँ मेन वर्ब या बेस वर्ब बोल सकते हैं। ओके, Yes, yes, sir. apart from this also I said there can verb has different moods, उसमें हम ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम बाद में करेंगे। डिफरेंट वॉइसेस एंड Yes, डिफरेंट मॉडल्स। और लास्ट में yes, मैंने बताया था कि वर्ब कभी कभी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन या एडजेक्टिव की तरह से आता है, तो उसको हम जेरेंड या पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, yes. दिस इज Sir, अ today my first class is here. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैं एक बार और किसी और स्टूडेंट से पूछता हूँ, कोई और भी इसको अब जरा रिपीट करके बताओ। अपार्ट फ्रॉम टेंसेस व्हाट other variety of forms are there which a verb can take? Mohammed, will you try? Just score, आप ट्राई करेंगी? रूपाली? Please, any one of you, please try. Sorry, sir. Actually, I could not understand properly. अच्छा, अब मैं हिंदी में बताता हूँ। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ब सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सारी फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। टेंसेस की क्लासिफिकेशन है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा इसका ऑक्सिलरी और मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन है। फिर ये वर्ब कभी कभी एक दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन या एडजेक्टिव की तरह ओके। तो अब हम वर्ब्स किसी और दिन लेंगे। हमने कल का जो क्लास था वो अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि सेंटेंस में वर्ब के एग्रीमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, और उसमें हमें पहले देखना पड़ता है सब्जेक्ट नाउन होता है, पर नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस सुनते हैं या बोलने जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट नाउन कौन सा है और ऑब्जेक्ट नाउन कौन सा है। और वर्ब को हमेशा हमें ऑब्जेक्ट नाउन से रिलेट नहीं करना है, सब्जेक्ट नाउन से करना है। रिलेट करने का क्या मतलब है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, कल सोमा मैम ने बताया था ना, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म लेगा, है ना। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जैसे राम इज हिटिंग द बॉल्स, बॉल्स प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि बॉल्स ऑब्जेक्ट नाउन है। सब्जेक्ट नाउन राम है और राम सिंगुलर है, इसलिए इज हिटिंग होगा, आर हिटिंग नहीं होगा। वर्ब प्लूरल नहीं होगा, आर हिटिंग प्लूरल वर्ब है, इज हिटिंग सिंगुलर वर्ब है। और क्योंकि राम सिंगुलर है, वही सब्जेक्ट है, इसलिए इज हिटिंग कहा जाएगा, आर हिटिंग नहीं कहा जाएगा। दिस इज मेकिंग द वर्ब अग्री विद द सब्जेक्ट नाउन। ओके, हिंदी में जब हम बात करते हैं, हिंदी के जब सेंटेंस बनाते हैं, तो अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। आप आप रिपीट करने का कोशिश कीजिएगा, अभी मैं आराम से समझाता हूँ। जो हिंदी का एग्रीमेंट होता है वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, उसमें हमें एक और बात पता चल जाती है, या एक और बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। खाली प्लूरल सिंगुलर ही नहीं, बल्कि मेल फीमेल का भी एग्रीमेंट करना पड़ता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, हिंदी में हमें
वर्ब से ही पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट नाउन है वो मेल है या मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। पेंसिल गिर पड़ी, पड़ी वर्ब है जो कि बता देता है कि जिसके बारे में वो बता रहा है वो फेमिनिन नाउन है। पेंसिल गिर पड़ी, रबर गिर पड़ा, तो रबर मैस्कुलिन नाउन है। ये हिंदी में पता चलता है लेकिन इंग्लिश में नहीं होगा। इंग्लिश में हमें वर्ब से ये नहीं पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट नाउन है जिसके साथ वर्ब को एग्री करना है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे पेंसिल फेल, रबर फेल, तो फेल से हमें ये नहीं पता चल रहा कि पेंसिल या रबर फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। Now let me see if any one of you can repeat what I have explained just now. Anyone? Please try. अभी मैंने क्या बताया? चेतना शर्मा, चेतना, गीतांजलि, एनीवन प्लीज। चाहे आप हिंदी में बोलिए। अभी मैंने वर्ब सर का आपने, यस सर, सर आपने बताया कि जो हिंदी में हम जब बोलते हैं तो जो वर्ब से ही हम पता लगा सकते हैं कि उसमें मतलब एक फेमिनिज्म के बारे में बात हो रही है, स्त्री या पुरुष के बारे में बात हो रहा है। बट जो इंग्लिश फेमिनिज्म, लैंग्वेज, फेमिनिन, फेमिनिन या फेमिनिन मैस्कुलिन है। हाँ, या फेमिनिन या मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। हाँ, वेरी गुड। और सर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में जैसे आपने बोला द पेंसिल फेल्स, तो हाँ पेंसिल मतलब गिरा या गिरी वो नहीं पता कर सकते हाँ हम। एग्जैक्टली, हाँ, रबर फेल, तो मैस्कुलिन या यस फेमिनिन का वर्ब से नहीं पता चलता इंग्लिश में। पर एक दूसरी यस चीज का पता चलता है और उसी से हमें एग्री कराना होता है, यानी कि वो प्लूरल है, वह नाउन, सब्जेक्ट नाउन जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, ये हमें एग्री कराना होता है। उसी के बारे में कल सोमा जी ने आपको उमा मैम 11 बता। रूल्स बताए थे, है ना। अब उनको आज हम रिपीट नहीं करेंगे, वो सोमा जी के साथ आप शायद अगली क्लास में रिपीट करोगे। अब लास्ट में मैं आपको एक मैं मंडे को क्लास लूंगा। मैं जनरली मंडे ही आया करूंगा। आज वैसे हाँ, अनुराधा जी को आना था पर हाँ, वो ज्वाइन नहीं कर पाई तो इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं मंडे क्लास लिया करूंगा और नेक्स्ट मंडे हम एक मैं टॉपिक दे रहा हूँ जिसपे आप सब 2-2 मिनट बोलेंगे और उसमें आपने कितना सही बोला, कहाँ गलतियां हुई, वो फिर हम सब लोग मिलके डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन? 2 minutes, ऑल ऑफ यू विल स्पीक। मैं आपको ये टॉपिक देता हूं, आई बिलीव इन गॉड बिकॉज, या तो आप इस पे बोलिए या इस पे बोलिए दैट आई डू नॉट बिलीव इन गॉड बिकॉज। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। या तो आप बोलेंगे आई बिलीव इन गॉड, ये एक डिबेट की तरह हो जाएगा। कुछ लोग जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड में वो बताएंगे क्यों बिलीव नहीं करते। खाली 2 मिनट बोलना है, ओके। पर बहुत अच्छे पॉइंट्स बना के लाना कि एक बार में सुनने में ही Yes, sir. आपके जो ओपोनेंट है उसको आपकी बात को मानना पड़ जाए। गॉड का प्रूफ क्या है या गॉड के ना होने का प्रूफ क्या है, ओके। Okay, sir. दोनों साइड पे व्यूज हैं। आप जो भी पसंद करते हो, जो भी आपका अपना व्यू है, उसके रीजंस को इंग्लिश में बोलने हैं 2 मिनट, और बगैर पढ़े बोलना। और अगली बार हम वीडियो सबके ऑन रखेंगे, बाल अपने सब कोम करके बैठना, ओके, Okay, sir. ओके सर। सो दैट वी नो यू आर नॉट रीडिंग। विदाउट रीडिंग बोलना है, ओके।
So see you on next Monday. Good night. Good night, sir. Good night, sir.